हाय गाइस, हमने ऑलमोस्ट फ़ोटो शूट कर लिया है, कुछ रील्स बनाने हैं एंड देन वील बी टेकिंग सम सेल्फीज एंड वी आर लुकिंग गुड राइट. सो वी आर थिंकिंग ऑफ डूइंग रैपिड फायर. Let's spice up the day. हाँ, this will be the most entertaining part of this video for you all, might be. लेकिन स्टिल जो हमने फ़ोटो शूट की है, अगर आपको वो फ़ोटो देखनी है तो आपको इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा. एंड या दैट्स ऑल. एंड इफ यू लाइक माई लाइनर to tell me, I'll give a tutorial. Mine as well. Yeah, But I I'll want as you. well. It's a duplicate. Let's start. What's your favorite drink? Mine? Answer करना है इतने में. फिर से बताना था. So in rapid fire we have to answer as quicker as we can. Possible. Like in seconds. Okay. 2 seconds, 3 seconds, So not you'll- 60 seconds. So you'll ask me question, I'll have to answer according to my choice and everything, right? Yes, yes. मेरे बारे में आंसर Of करना. course. To know you better. Okay. And secondly, you have to answer it very fast. Fast. Okay. Fast as you can. Okay. I'll try my best. Let's start. Okay. So Mm-hmm. your favorite drink? Or other than juice. What juice? Fresh juice. Lemon juice. You're so slow. Mango juice. Mango Oh, shake. butterfly. Mango shake is my favorite drink. Okay. So I'm little late, but still. मैं पहले खुद को जानूँ. when are you most productive? At what time of the day? Okay, what time? Night. जैसे जैसे दिन ढलती है ना गाइस, मेरे अंदर एनर्जी आती जाती है. दोपहर के टाइम में तो आई जस्ट हेट, क्योंकि उस टाइम मेरी एनर्जी ऐसी होती है बस खाओ सो जाओ. सो या नाइट इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द डे for me. Who is your inspiration and why? To be specific, I myself is my inspiration because every time I जब खुद को satisfy नहीं कर पाती हूँ तो I get inspired कि ठीक है यार, तुमने बेस्ट किया है तो you can do it more better. So yeah, I get inspired by myself. Summer or winters? Winter, spring. That's not even in the question, yeah? Not even in the option. Summer. Yeah, summer. What's your favorite number and why? My favorite number is 17, and because it's my birthday and I think it's my lucky number. That's great. Your favorite cake flavor? Chocolate, no doubt. Chocolate is the only flavor I like. How do you start your day? I start my day with hot water with lemon. Okay, and in which subject were you worst at the school time? Maths, of course. I just liked it. I loved hate. it. I It's the best hate subject. maths. Like Seriously? I love it too much. Nice. I was so I good just at it. appreciate people, and I just like people who love maths because What advice would you give to your young self? young self that I should have done things or started things before which I have done. मतलब काफ़ी टाइम के बाद I realized many of the things, like I was lacking of confidence, and then finally I started gaining it and I started few things काफ़ी late से, so to be more confident, since when you understand what is the meaning of confidence. Okay. So, yeah. So Because you can do more better if you will realize it earlier. So yeah, what scares you? I took lots of time, right? Yeah. Water. Water? So So you don't bath? No, not like that. मतलब सीवी को देख के I feel so scared. मेरे को डर लगता है पानी I में. understand. Yeah, sometimes I feel too. Even height, sometimes not really. You're बहुत a ज़्यादा. crew girl. Not like that यार, like building पे खड़े होके ऐसे नीचे देखना is little scary. I understand. I live in 14th floor, guys, so not that height kind of, that fear of height, but yes, बहुत ज़्यादा height, like बुर्ज खलीफा पे खड़े हो जाओ और नीचे देखो तो you will obviously feel
scared. Absolutely are. हम लोग एक बार ऋषिकेश गए थे और वो डिस्टेंस कुछ ऑलमोस्ट 5 फीट होगी जो हमें नीचे कूदना था पानी में. एंड मैंने अपने आप को 2, 3, 4, 5 बारी मैंने खुद को ये किया कि नहीं, यू कैन डू इट. मैं गई वहाँ तक, बहुत ज़्यादा सब ने कर लिया, बस मैं नहीं कर पाई. मैं वहाँ गई कि मैं कर सकती हूँ. वहाँ खड़े होके पॉइंट पे ऐसे खड़े होने के बाद फिर मैं वापस आ गई. मेरे से हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो हाइट से डर लगता है सर, प्यार से नहीं. Cat or dog? डॉग, डेफिनेटली, फॉर श्योर. Your favorite city, country, or any place in the world? In the world? In the whole world. I've not Where traveled you want to live, many like places here. you googled or you saw somewhere, like anywhere. Switzerland. It's because of their weather. वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी भी पड़ती है एंड धूप भी आती है. तो मैं मिक्सचर, आई लाइक मिक्सचर ऑफ थिंग्स. आई डोंट लाइक कि ठंडी ठंडी ही रहे, गर्मी गर्मी ही रहे. मेरे को सब कुछ अच्छा लगता है. जैसे इंडिया का मौसम है ना, इट्स बेस्ट. बट आई वुड लव टू लिव इन अ फॉरेन कंट्री एंड एक्सपीरियंस. What would you change about yourself? It's a very easy question for me because I get angry so fast. तो मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है किसी से भी. बट एट द सेम टाइम मेरे को गुस्सा ख़त्म भी बहुत जल्दी हो जाता है. अगर मैं किसी से गुस्सा हूँ और तुम अगर मुझसे प्यार से बात कर लो तो थोड़ा टाइम चाहिए होता है, लाइक हाफ एन आवर, तो मैं ठीक हो जाऊँगी. बट हाँ, गुस्सा बहुत जल्दी आता है. मैं चिढ़ जाती हूँ. आई गेट इरिटेटेड वेरी फास्ट. दिस इज ट्रू सेल्फ. People should know about their Themselves, true right? self, right? Exactly. Yeah, exactly. एंड आई टोटली एक्सेप्ट कि मेरे अंदर ये कमी है. And you should know. You should know. Then only That's you the will only be way, able to yeah. change. That's the only way you can change yourself, Yes. right? What's something that you like doing? I love फोटो शूट. मतलब ऐसा फील आता है ना जब मैं रेडी होके फ़ोटो शूट्स करती हूँ. द मोस्ट फेवरेट थिंग ऑफ माइन. आई फील सो हैप्पी. एंड या, ईटिंग फूड. I'm a foodie. I love food. I love eating. So yeah. And yeah, What's your sometime talking with best friends, spending time with the family. These are few things I love. And also traveling to new places. Obviously, this is my hobby, and I'm obviously doing the job for that only. So yeah, Who do you love the most? my family. Okay. And have you ever been in love with someone? Yes, I'm going to marry him soon. That's great, amazing. And what is success for you? Success for me is a point of time when you are not really want to do anything, but you have enough that if you will not do the thing, you are happy, you are living happily. So that is the success for me actually. You might not understand what I mean, but मेरे कहने का Actually, I'm understanding. है ना कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में ना कभी कभी होता है कि अब थक जाते हो यार, अब नहीं करना कुछ, अब बस मेरे को ऐसे रहना है कुछ साल, घूमना है, फिरना है, खाना पीना है. एंड यू आर हैप्पी. दैट इज़ वॉट सक्सेस मीन फॉर मी. इट्स नॉट लाइक हैविंग बिग गाड़ीज, बिग व्हीकल, बंगलो, पैसे इन द अकाउंट. It doesn't matter. You just need to be happy at a point of time. When there is nothing and still you are happy, that is success for me. It's Great. deep, but It is, yeah, it is. Sunrise or sunset. I love golden hours. But of course, sunrise is always Golden hours, you can get it both the time. Like, it's गोल्डन हार इन द सेंस कि शाम के टाइम पे ना मेरी एनर्जी आती है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें कर पाती हूँ, सोच पाती हूँ. मेरी दिमाग जो है ना एक्टिव हो जाती है. इन दैट सेंस सनराइज okay, you are not able to wake up early, like yeah, I'm not a morning person. but I definitely love sunrises. But ठीक है, sunset is Favorite color? obviously pink. Pink is my most favorite color. Pink में भी बहुत सारे pinks आते हैं guys, let me tell you. And उसमें भी baby pink is peachy pink is my favorite. So yes, Chocolate, vanilla, butterscotch. chocolate. Favorite food? Indian. In Indian, what? हाँ. Chole bhature.
Chole bhature, dosa, yeah. Chole bhature anytime. If you will give me chole bhature any time. With gulab jamun, of course. Favorite dessert? Gulab jamun. Okay. What's the first thing you notice about someone when you meet them? Vibe. How they are, matlab, the way How they you talk. feel like around them? Actually. And how you feel around them, that decides when they speak to you, they share things with you, and when they It's make just you. when you first meet someone, like you just saw him or you just had a conversation like hello, hi, and things. What I see Yes. is Maybe. What you seen first? how they are behaving with you. Behavior matters. Behavior literally matters. क्योंकि sometimes it happens कि आपका मूड खराब है और सामने वाला थोड़ा जेस्चर अच्छा दे देना तो आपका दिन अच्छा बन जाता है. और अगर जेस्चर थोड़ा सा भी खराब है, फर्स्ट मीट में ही आप यू आर शोइंग योर एटीट्यूड एंड ऑल, दिस इज़ वेरी बैड. मतलब मेरे लिए बहुत ही टर्न ऑफ कह सकते हैं, टर्न ऑफ पॉइंट वो मेरे लिए है. तो या दैट मैटर्स. जेस्चर इन द सेंस कि व्हेन यू मीट फर्स्ट यू मीट समवन, यू एटलीस्ट इफ़ यू डोंट नो, एटलीस्ट जब पता है क्या होता है, जब आप मार्केट में भी मूव कर रहे होते हो, आप वॉक कर रहे होते हो, इनडायरेक्टली किसी के ऊपर नज़र चली जाती है, एटलीस्ट गिव अ स्माइल. क्या फ़र्क पड़ता है यार आपके people who don't even smile back. Exactly. I know it's all right, but that's their nature. My nature is to give spread positivity. So at least smile. तुमसे कोई कुछ ना मांग रहा है ना कुछ तुम्हारा लॉस हो रहा है, so you should at least smile. So that's what I mean. हाँ, what did you ask? Best fashion advice you've ever gotten? Fashion advice, right? Anybody who gave you like you liked it very much that you are still following that? Kind of. I have learned a lot in fashion. Fashion में like being wearing comfortable clothes is one thing for me, which I have learned from social media, and I think that is the best one. You know, you don't have to be someone else to look fashionable. Be you. Just be be you. you. Wear what you like to wear, whether it's sari or suit or shorts. It's your choice. So for me, that is what fashion means. I know your question was different, but that is an advice which I got. Fashion is what looks good on you. Oh, what's the best compliment you've ever gotten? Best compliment on my recent flight. I had a flight, and the passenger was so humble, so nice, that he was so old, I would say. I guess 60, above 60 he was, and he was so humble. I took few seconds to think that is there such kind of person Still exists. exist, because नहीं मिलते यार, ऐसे people नहीं मिलते. नहीं, वो so humble. Passenger, to be very honest, अब ये टॉपिक खुला है जो डिस्कस कर ही लेते हैं. पैसेंजर्स या फिर होटल में भी आप जाओ तो लोग ऐसे ट्रीट करते हैं वेटर्स को या फिर इन फ्लाइट में कि इफ़ दे आर पेइंग 1000, 2000, 10,000 रुपीज़, यू आर देयर सर्वेंट. इट्स नॉट लाइक दैट. जो लोग एक्चुअल में एडुकेटेड होते हैं ना, दे विल बी वेरी, क्या बोलते हैं उसको यार, हम्बल Down to एज earth हाँ, and- डाउन टू अर्थ इज़ द वर्ड. इतने डाउन टू अर्थ थे ही वॉज. हम अपना काम कर रहे थे ना, ही वॉज देयर टू यूज़ द वॉशरूम and it was not his fault. We just moved our cart and we just let him go, and he was so politely saying thank you, sorry beta, sorry, I'm very very sorry. Yeah, I'm not saying कि word इसने sorry बोल दिया तो he was humble, but पूरी flight में, throughout the flight we served him, and he gave lots of good comments. क्या बताऊँ मैं, मेरे पास सारी words नहीं है, लेकिन he at the end of the flight he was like, I want your company feedback ID that I want flight? to. It was a flight to Bangalore, Delhi to Bangalore. So he was that polite. He asked our email ID and he was like, I'll ask my son to write a long mail for you guys. You are doing very nice. I really appreciate you. And सच में तुम लोग बहुत अच्छा काम करो. But he was so humble and nice
दिन ही बना दिया उन्होंने. ही वॉज सो नाइस, लाइक ही वॉज अ गॉड टू मी दैट डे. मतलब दिन बना दिया यार एक्चुअली. सो एक आपकी एक एक सेंटेंस, एक वर्ड, एक स्टेटमेंट अगर किसी का दिन अच्छा करता है तो यू शुड डेफिनेटली डू दैट. सो बेसिकली मेरे लिए बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं. आई शुड आस्क सम क्वेश्चन विथ यू नाउ. मेरी जनता को ऑब्वियसली जानना अच्छा लगेगा कि सुरभि कैसी है, क्या है. यहाँ योर फेवरेट फ्लावर. फ्लावर तो यार सारे ही अच्छे लगते हैं. फेवरेट ऐसा कोई पर्टिकुलर फेवरेट नहीं है. आई लव all the flowers, yeah. बस मुरझाए हुए फ्लावर्स नहीं पसंद, फ्रेश फ्लावर्स.